3 लाख रुपए ले रहा हूँ, 10 मिलियन पे मैं 6 लाख रुपए ले रहा हूँ, 50 मिलियन पे मैं 15 लाख रुपए ले लूँगा। सेलेना गोमेज और ये रोनाल्डो, मतलब दे चार्ज $1 million फॉर अ पोस्ट, 7.5 करोड़। जीवन में नहीं बनाते लोग इतना पैसा। इन शॉर्ट टर्म आपको लगेगा ये बढ़िया नीश है, ये सही बातें बोल रहा है, $1 million पोस्ट का मैं कल से कंटेंट बनाऊंगा, बट आप ये भी तो देखो कि आप बनने लायक हो कि नहीं हो। लोगों के पास डेप्थ है नहीं, वो आके कर भी देंगे तो कोई पॉइंट नहीं है। एल्गोरिथम सपोर्ट करेगा, 3 महीने पैसे कमाएंगे, 6 महीने पैसे कमाएंगे, 7th महीने से पैसे नहीं कमाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। So that is the downside of it, because I feel that if you are telling that a creator who has 1 million followers is regarded as a celebrity and cannot promote a product, how does that make sense? For a lot of people, the benchmark of success is getting a lot of money, getting these interviews, getting to be seen, getting validation from a lot of people. आपके लिए success की definition क्या है? मेरे लिए success की definition क्या है यार? मेरे लिए success की definition, good question, I don't know. I think मेरे लिए खुश होना बड़ा मुश्किल है, because I've not done any MBA or I've not worked in a company as such. मुझे फंडामेंटल्स ऑफ सिस्टम्स नहीं समझ में आते अभी भी, लाइक एक्सेल, मेरे को अभी भी एक्सेल बेसिक ही आता है। तो फाइनेंस तब स्टार्ट ही हो रहा था, कैटेगरी क्रिएट हो रहा था वो, अब कैटेगरी बन गया तो लोग आ रहे हैं, राइट। सो निशेस आर इन द रीचेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो, उसमें अभी भी आप खेल सकते हो, बट आप फिर छोटे ही होते जाओगे, छोटे होते जाओगे। अभी जैसे एडमी का लाइक अब फाइनेंस में हूँ, अब मैं एक्सपैंड कैसे कर सकता हूँ? माई ग्रोथ इज लिमिटेड बाय द होल फाइनेंस मार्केटिंग बजट्स। रेड ओशन इसलिए अपॉर्चुनिटीज इसलिए कम हुए जा रही हैं बिकॉज लोग अब ना उस क्रिएटर्स, अगर मैं बोलूँ क्रिएटर्स और आते जा रहे हैं, एवरी डे देयर इज अ न्यू क्रिएटर कमिंग, बट दे आर नॉट कमिंग फॉर क्रिएटिंग कंटेंट, दे आर कमिंग फॉर मेकिंग मनी। मैं भोपाल में बैठा हुआ हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ तो मुझे तो लगेगा ना कि मैं बाप हूँ, बिकॉज मेरा सराउंडिंग में ही कुछ नहीं है। Correct. बट नाउ व्हेन आई कीप माई सेल्फ क्लोजर टू पीपल हू आर वे अहेड एंड आई टॉक टू देम, तो मुझे कैसे लगेगा कि मैं बाप हूँ? मुझे तो लगेगा भाई। थोड़े पॉजिटिव मनी के बारे में बात करते हैं अभी। हाउ एग्जैक्टली डज दिस बिजनेस वर्क? आप का क्या कमीशन होता है? व्हाट इज द काइंड ऑफ ब्रांड डील्स दैट यू लुक अप टू, और आपको लगता है कि अच्छा ठीक है ये ब्रांड डील क्रैक कर लिया तो हमें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं? जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव एज टू हाउ मच यू कैन अर्न इन दिस यार इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस, लाइक आई डोंट नो पीपल व्हाई पीपल ट्रीट मीडिया बिजनेस एज समथिंग एल्स ओनली, बट सारे बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे इज कमीशन बिजनेसेस। जोमेटो कमीशन बिजनेस है, टेक प्लेटफॉर्म तो ठीक है बोलने की बात है, बट एट द एंड क्या कर रहा है वो? द कनेक्टिंग फूड, सो खाना जो बना रहा है उसको कनेक्ट करता है, दे चार्ज 30-35% व्हाटएवर। सिमिलरली मतलब मैं जोमेटो यहाँ पे बोमा बोमा इज माई ब्रांड और क्रिएटर, जिसको इंटर एक्सचेंज कर लो, ये खाने वाला ही है, तो यहाँ क्रिएटर है, यहाँ पे ब्रांड है, हम जोमेटो हैं, वी मेक दैट हैपन, वी अनेबल दैट, जैसे जोमेटो अनेबल करता है, एंड देयर इज अ कमीशन अटैच्ड, दैट्स इट। every business is like that at the end of the day. So tell me a little bit कि क्या होता है? What is the industry standard now? Because why I'm saying this is because it's still relatively very new, right? Yeah. A lot of people don't know about this space. Last time when I remember when I spoke to Sharan also, why I'm referring to again and again Sharan is because I got to know a lot of things with that conversation about the influencer market itself and the kind of things that are running, right? So पहले rate card भी नहीं हुआ करता था. Then you guys came up with a rate card. Now you know for a fact that ये rate card है. तो आप कितने पैसे बना सकते हो in this particular space? I'm not asking particularly you, or if you are willing to disclose that वो भी हम बात कर सकते हैं. And how do you go about it? Like क्या percentage होता है, क्या cut होता है? How do you negotiate with the influencers or the brands to get it? Firstly, it's very subjective, ठीक है? At the end, it's a negotiation. Negotiation में आप 80% भी ले सकते हो, आप 2% भी ले सकते हो, राइट? जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो सेलिब्रिटी का, उसमें मेरे को पता लगा कोई डील हुई थी इसमें 5% हुआ था, राइट? सो इट्स लाइक एक वन ऑफ डील थी वो, जो भी था वो। इट्स एट द एंड नेगोशिएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है या उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं आ रहा है। आई वुड से राइट फ्रॉम मेकिंग 1,000 rupees a month to making 1,000 crores a month भी हो सकता है। Like I recently was reading about Ryan Reynolds, जो उसने $1 billion exit लिया वगैरह वगैरह, right? So he's also an influencer at the end of the day. He's an influencer who is way too big to be called an influencer. He's a mass influencer, इसको celebrities बोल दिया है, right? तो अब natural extension of when आप एक बार आप creator cap cross कर दो, जिसको ideally गवर्नमेंट 1 million बोलती है, बट एक्चुअली वो एटलीस्ट 10 million होना चाहिए, 10 आपने क्रॉस कर दिया, फिर आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, तो वो नंबर ड्रिवन हो गया ना।
अगर मैं 1 मिलियन पे 3 लाख रुपए ले रहा हूँ, 10 मिलियन पे मैं 6 लाख रुपए ले रहा हूँ, 50 मिलियन पे मैं 15 लाख रुपए ले लूँगा, सेलेना गोमेज और ये रोनाल्डो, मतलब दे चार्ज $1 million फॉर अ पोस्ट, 7.5 करोड़। जीवन में नहीं बनाते लोग इतना पैसा। तो अपसाइड तो कुछ मतलब कुछ नहीं है, मतलब इतना पैसा कमा सकते हो आप। डाउन साइड भी मतलब बट डाउन साइड है, डाउन साइड इन शॉर्ट टर्म आपको लगेगा ये बढ़िया नीश है, ये सही बातें बोल रहा है, $1 million पोस्ट का मैं कल से कंटेंट बनाऊंगा। बट आप ये भी तो देखो कि आप बनने लायक हो कि नहीं हो, आपको बोलना आता है, मतलब वो सॉफ्ट स्किल्स हटाओ, एक सॉफ्ट स्किल एस्पेक्ट हो गया, एक हार्ड स्किल एस्पेक्ट हो गया कि डू यू हैव द स्किल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिकॉज जितना कंपटीशन बढ़ेगा, जितने लोग आएंगे, उतना डेप्थ इंपॉर्टेंट होता जाएगा। लोगों के पास डेप्थ है नहीं, वो आके कर भी देंगे तो कोई पॉइंट नहीं है, एल्गोरिथम सपोर्ट करेगा, 3 महीने पैसे कमाएंगे, 6 महीने पैसे कमाएंगे, 7th महीने से पैसे नहीं कमाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो दैट इज द डाउन साइड ऑफ इट। मनी टर्म्स में तो मतलब ठीक है, दिल मेक 10 lakhs 20 lakhs 30 lakhs इन 6 months, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, बट देन 1 साल बाद कितने कमा रहे हो तुम, 2 साल बाद कितने कमा रहे हो तुम। शेल्फ लाइफ तो अच्छे अच्छे क्रिएटर की 5 साल होती है। But then, would you recommend somebody who's actually willing to get into a space like this to pursue this? हाँ, आई मीन इफ अगेन व्हाट इज योर इंसेंटिव, व्हाट इज द ड्राइविंग फैक्टर। इफ इट्स मनी, तुम स्टार्ट ही बैड गलत इसमें कर रहे हो ना, स्टार्टिंग ऑफ द रॉन्ग फुट। हाउ डिड आई स्टार्ट? आई डिडंट स्टार्ट फॉर मनी, तब तो पैसा था भी नहीं, मैं तो आई स्टार्टेड जस्ट सॉर्ट ऑफ प्योर क्यूरियोसिटी, प्योर फैंडम और लाइक वावनेस ऑफ इट। अब वो वावनेस गया, अब तो बस भाई ये पेड प्रमोशन कर रहा है, पैसे कमा रहा है, पी डाल देंगे बस वो। सो आई थिंक वो बहुत चेंज हो गया है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। इवन इफ यू वांट टू like start off as a passionate creator, the money will corrupt your brain. Let's talk about the paid promotion bit, because we were talking about the government regulations also. The government has regulated now a lot of paid promotions that are being done. You guys also need to be very careful about who you're signing up, who you're working with, because your reputation is also at stake right now, right? So do you think that this is increasingly making things difficult? Because India mein, I was reading of statistics, and I saw that in 2021 or 22 itself, 7.5 lakh creators have made content on YouTube, right? Alone, where they have gotten almost 10,000 crore is the figure that I came across. In Indian GDP, it was supported through YouTube, the content that they had created, in terms of the AdSense and the money that they have gotten. And डील्स के पैसे शायद मैं वो अलग रख रहा हूँ, वो शायद और ज़्यादा होगा वहाँ से. सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, डू यू थिंक द गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट दिस स्पेस, और आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली help the creators get back or gain the kind of lost trust जो भी प्रॉब्ली हो रहा है? We are also seeing, मैं शायद क्वेश्चन बहुत बड़ा कर रहा हूँ, तो पूछ लेना बीच में अगर आपको कहीं रोकना है, और हम वी कैन गो अहेड. एक डी इन्फ्लुएंसिंग का ट्रेंड भी अभी चला हुआ है. इट्स हैपनिंग ऑन ट्विटर, वेयर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग कि ये these are the products I don't like, right? These are the products I have recommended to you, but these are the products I don't like. And उसके पैसे उन्हें नहीं मिल रहे हैं, but they are getting their credibility back. यार देखो, गवर्नमेंट का एट द एंड काम क्या होता है? जनता को अनेबल करना, राइट? एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग रेगुलेशंस इज किसी के साथ गलत ना हो, स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, बिकॉज एट द एंड अगर लोगों का नुकसान हो रहा है तो अगेन वही एक ही बात होती है, जस्ट द अदर वे अराउंड. सो आई थिंक अभी रेगुलेशंस आना सही चीज़ है, होने चाहिए, बिकॉज इफ रेगुलेशंस आर देयर देन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, लाइक इट्स लाइक वैलिडेटेड दैट दिस इंडस्ट्री इज देयर. इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज once the government has validated it, more and more brands will come into it. So the overall market will increase. बट आप किस तरीके से कर रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना. अभी गवर्नमेंट थोड़ा रिग्रेसिव वे में कर रहा है, बिकॉज आई फील दैट इफ यू आर telling that a creator who has 1 million followers is regarded as a celebrity and cannot promote a product, how does that make sense? What is the logic behind it? Like क्रिएटर पर्सपेक्टिव से तो आपने उनका रेवेन्यू हटा दिया, लाइक स्टॉक ब्रोकर्स के साथ आप नहीं कर सकते, दैट्स द पॉइंट. बट क्यों, क्या मतलब क्या है? देयर इज नो लॉजिक टू इट, रीजनिंग क्या है? तो आई थिंक दैट्स अ रिग्रेसिव मूव टू हैव. डिस्क्लेमर लगाना, लोगों को बताना कि यार बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए, अदरवाइज मास आप बताओगे नहीं तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा. विच सो आई थिंक द प्रॉब्लम वाज गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेशंस तो बोल दिए, रेगुलेटर्स ने इनफैक्ट वो तो ASCI हो गया, कुछ भी हो गया, उन्होंने बोल तो दिया, बट उन्होंने I don't think they have spoken to the stakeholders. I don't know anyone in my circle who they have spoken to. They're not spoken to any agency. They're not spoken to any creators. So who's taking this decision? How do you know about this industry?
So I think that is one problem, but I'm sure वो अभी बातें कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कोई देखेगा, किसको भेजेगा, or like in general they will reiterate or like change the policies, but right now it's a little counterproductive. Let's talk about it. You're 23, Yeah. right? For a lot of people, the benchmark of success is getting a lot of money, Yeah. getting these interviews, getting to be seen, getting validation from a lot of people. आपके लिए success की definition क्या है? मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है यार? मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन, गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो। यार आई थिंक मेरे लिए खुश होना बड़ा मुश्किल है, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक इट वुड बी, सक्सेस इज, सोचना पड़ेगा यार। Because at the age of 30, I have this question: when you are 30, 32, 35, would you still chase, say for example, an X amount of money or X नहीं, crore नहीं। of money that I मनी made तो in मतलब, मनी इज नथिंग यार। मनी इज जस्ट लिटरली, मुझे अभी ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास पैसे हैं, मुझे कुछ, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर मनी, दैट्स द ओनली थिंग। एक बार वो हो जाए ना तो फिर वो नहीं होता है। तो तभी तो बोलते हैं ना, मैस्लो हायरार्की, पैसा आ गया, स्टेटस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो फिर तुम इम्पैक्ट पर्पस ढूंढने लग जाते हो। सो आई एम येट टू फिगर आउट what success is, to be very honest, but success at the end is a comparative metric, right? If there are 10,000 23-year-olds doing the same thing that I'm doing, I'm not successful anymore, I'm average. So technical definition के हिसाब से it's about staying ahead of the curve. आप दूसरों से अच्छा कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, बट मेरे को नहीं लगता यार उस वो थ्योरी। मैं पहले ऑफकोर्स वैसे सोचता था, बट अब, अच्छी बात बोली मैंने, बट हाँ, आई डोंट थिंक मैं वैसा कुछ देखता हूँ। आई थिंक फॉर मी इट्स अबाउट, इट्स लिटरली अबाउट लाइक गेटिंग बेटर एवरी डे। मेरे को उसमें एक किक मिलती है। Yeah, I think it's that, improving every day. Why I asked you this is also because a lot of people would see that he has achieved so much in so little time, right? And what am I doing? I'm probably struggling at my own place, और मुझे तो ऐसे एक 4 लाख की नौकरी भी नहीं मिलती है, and I'm qualified, मैं BA किया हुआ हूँ, मैंने MA किया हुआ है, फिर भी मुझे ये नौकरी नहीं मिल रही है, और ये बंदा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। Because this is exactly what social media does, Yeah. right? Yeah, I Because agree. you're consuming, because you're thinking, because you're looking at people at different places, और आपको ये चीज़ लग रही है। तभी तो कहते हैं ना, आप काम ज़्यादा करते रहो, मेहनत करते रहो, और सही बैटल, राइट बैटल खेलते रहो, आपको वो पॉइंट आएगा, वो क्लिक कर जाएगा, एंड इट वुड नथिंग डू विथ यू, इट वुड जस्ट बी बाय द सिचुएशनशिप ऑफ इट दैट यू वुड बी सक्सेसफुल। आपको कभी ऐसा लगता है आयुष that you probably could have thought about studying again? पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी, जॉब पे नहीं आना चाहिए था इतनी अर्ली? बिकॉज क्या होता है ना, एक बार आप मनी टेस्ट कर लेते हो, फिर आपको लगता है कि वही मनी बार बार चाहिए। दैट्स व्हाई दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू एंड आई एम आस्किंग यू, कभी ऐसा लगा कि वापस पढ़ाई में जाना चाहिए, वापस कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, वापस आना चाहिए टू मेक श्योर जो मैं काम कर रहा हूँ वो प्रॉपर हो और बेटर हो? Every day, I would 100% agree to it. Because I've not done any MBA, or I've not worked in a company as such. मुझे फंडामेंटल्स ऑफ सिस्टम्स नहीं समझ में आते अभी भी, लाइक एक्सेल, मेरे को अभी भी एक्सेल बेसिक ही आता है, इंटरमीडिएट टच करना आता है, बट लाइक नॉट अ एक्सपर्ट एट एक्सेल शीट्स, और लाइक टूल्स, एंड लाइक रनिंग 20 पीपल कंपनी, एंड कैसे सिस्टम मैनेज करते हैं, दिस दैट, द थिंग दैट यू आर टॉट एट एन MBA, वो मुझे नहीं आता है। एंड देयर सो मेनी डेज वेयर आई एम लाइक कि यार कर लिया होता, MBA कर लिया होता, या वो पढ़ लिया होता, या ये कर लिया होता, तो वो होता। Having said that, I do think about should I take a break or should I have I done that? क्योंकि मेरे पापा भी ये बोलते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि जिस नीच में जाना है या जिसमें जाना है, वहाँ पे पहले किसी के अंडर 2 3 4 साल 5 6 साल काम कर लो, उसके बाद खुद का कर लो, क्योंकि तुम्हें सब पता होता है, which is a very very good point. And that's probably the smartest way you should do it. But I would say that आप वो सब करते हो, MBA करते हो, to be able to increase the efficiency of doing it and increase the success metric, right? Increase the chances of being successful. Now, it's a very subjective thing. You have to analyze this for yourself. But in my situation, मेरे पास है bandwidth to make those mistakes myself, to go out on the internet and search, and to ask people, and to get a business coach XYZ, and to refine it via doing that journey. That's a very very privileged position, to be honest, and clarity दे रहा हूँ मैं, बहुत privileged position है, ऐसे सब नहीं कर सकते, 99% नहीं कर सकते, ऐसे फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा फलाना, मेरे पास वो privilege है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। Otherwise I would have idly thought of studying first, getting that basics correct,
because एक बार it's a common question that people will ask to 35 years old, 40 years old business people, like, knowing that that today, would you choose all the money or you choose being a 20-year-old with this knowledge? And 90% of people choose knowledge with a 20-year-old, right? It's the same question that you asked कि मेरे पास अगर इतना होता तो प्रॉब्लम है इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता. तो या 100% आई थिंक इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई करूँ, या पढ़ाई करूँ मतलब कुछ फंडामेंटल सीखूँ, बट कुछ नहीं होता है, सीख नहीं पाते हो आप. Okay, so Finnet Media अभी कहाँ पे है? How many people are there? What is the kind of business that's going on? How many creators have you enrolled? और मैं एक exciting चीज़ देख रहा था आपके वेबसाइट में where you have said that exclusive creators हैं आपके कुछ. What is the concept of the exclusive creator? अगर आप थोड़ा ऐसे brief में यार we बता have दो. a 20 member team, 18-20 लोग हैं, 30 के आसपास एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स. एंड एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स का मतलब ये होता है कि वी रिप्रेजेंट देम. जैसे cricketers are represented by certain franchises, certain companies. Celebrities are represented by certain companies. Similarly, creators are being represented by certain companies. So when we say exclusive, it's like we represent them. We do, like, we build everything around them, blah blah blah. और एक और सवाल क्या आपने पूछा तीसरा? कितने creators हैं अभी और हाँ, we कितने have 30 creators roughly. And we don't want to get into the race of getting in creators. Like मालगाड़ी की तरह हम ऐड नहीं करने हैं. And I'm saying that because there are a lot of people who do that. So I think quality over quantity. Yeah. Right. और क्या लग रहा है? I mean, you started off, हमने हमारा conversation भी start किया when I asked you कि actually में figure क्या है? What is there a figure in mind that you are sort of chasing right now with this particular agency? Do you have a vision saying that this is a company that will reach to a particular level at this particular point? No, I don't think I have that number anymore. I don't look at numbers now. I think numbers only till a certain extent कि survival चल रहा है and growth हो रही है and decent and all that. But now it's about probably doing cooler things, better things, things that give you the kick. Is that's what I'm doing, off business also I'm doing cooler things like ice bucket challenge and all that. I sent that video to my mom and मेरी मम्मी ने कॉल करके मेरे को चिल्लाने लग गई कि तुम ice bucket challenge क्यों कर रहे हो मेरी माँ. It's a good thing to do, right? So I think I'm experimenting more. Similarly, business maybe I'm trying to experiment more and chill business a little more than numbers. मेरे को corporatization नहीं करना है, to be very honest. मज़ा आ रहा है तो प्रेशर नहीं डालना है फालतू का अपने आप पे कि यार ये कर ले तो वो कर ले, बिकॉज बीच में डाल रहा था, बट नहीं यार, आई डोंट थिंक दैट्स अ सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग. So if somebody is interested in influencer marketing, trying to understand from you, what are the kind of things that you should start with? So for example, अगर आपको कोई skills develop करनी है, अगर आपको कुछ चीज़ें अपने आप में better करनी है, what are the things that they need to do? और इसके लिए कोई manual है क्या? कोई reading material है या फिर आप कुछ ऐसा suggest करते हो लोगों को पढ़ने के लिए? ये मेरा कोर्स होता मैं प्लग इन कर देता, पर मेरा कोर्स नहीं है. Sadly आपका कोर्स नहीं है, but हमारा कोर्स है, मैं plug in कर सकता कर दो हूँ. आप. So हम definitely, as I mentioned, there is a course on Altuni, is a certification that we are providing, जो influencer marketing भी सिखा रही है, और probably आप जैसे experts भी होंगे वो कोर्स में जो ये teaching करवा रहे होंगे उनसे. So I am trying to understand from you कि आप ऐसे कुछ courses refer कर सकते हो या फिर I mean, this course, you should take this course. नहीं यार, I don't think there's any course. I didn't know that you guys have a course in influencer marketing. That is insane. Unfortunately नहीं है. You can watch YouTube videos. मतलब basic ही बोलूँगा मैं. YouTube videos देख लो, वो सब देख लो. But कोई baseline है? आप क्या पढ़ रहे हो आजकल? Like, is there something that you are referring to? जो आप यार अभी तो मैं Zero to Viral पढ़ रहा हूँ. शरण की बुक पढ़ रहा हूँ. Yeah, this yes, book is your Zero to Viral. Yeah, it's about how to go viral. Again, coincides with how to become a good creator. So I'm reading that right now. But other than that, यार, I'm curious in general about businesses and क्या हो रहा है market में. तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, YouTube videos देखता हूँ. पढ़ता तो कहाँ ही हूँ, YouTube videos ही देखता हूँ. The last 2-3 books that I've read was about culture. There's this book called Netflix's No Rules, which is about how Netflix का culture is so different, so free and all that. तो मुझे वो बुक में बहुत मज़ा आया. उस टाइप की बुक्स पढ़ता हूँ जिसमें मुझे लगता है पढ़ के आई कैन इम्प्लीमेंट इट. आई एम इनटू बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स ऑल्सो अ लॉट, लाइक हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड टाइप बुक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, मैं वो पढ़ता हूँ. एंड ऑन द इंटरनेट आई जस्ट रीड, आई ट्राई टू वॉच. थोड़ा हेल्थ की तरफ मैं शिफ्ट हो रहा हूँ. हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड ऑल दैट. सनलाइट ले रहा हूँ एंड ऑल दैट, आई गेस. सो ऑल्सो रियलाइज दैट basics is important, drinking enough water, breathing, मतलब कितनी बार बोल लो, but वही है. So yeah, I think these are the kind of things that I'm into. So अभी Ayush, we are
ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस Yeah. पर्टिकुलर कन्वर्सेशन मैं और स्ट्रेच मुझे लग नहीं रहा है आपको करना मन कर रहा है और बात करने नहीं का। नहीं मुझे तो बिल्कुल मन कर रहा है बट और मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा इस कन्वर्सेशन को बिकॉज हाँ. you know you must have also your plans Yeah. on Saturday I have a मेरे भी podcast today. yeah Yeah. so मेरे भी plans हैं I'm not हम्म. holding you back तो हम्म. मुझे ये समझना है आयुष कि आपको फ्यूचर दिख रहा है इन द स्पेस दैट यू आर इन राइट नाउ अगर फ्यूचर दिख रहा है तो किस तरीके का फ्यूचर दिख रहा है आपको फ्यूचर और लोगों के लिए दिख रहा है क्या जो यहाँ पे आना चाहते हैं और एक्चुअली काम करते हैं यार जगह तो बनानी पड़ेगी सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर कर दिया मैंने यू हैव टू मेक योर ओन प्लेस योर डू आई नो वेयर दैट इज नॉट श्योर पता तो मैं खुद बना लेता पहले so that would be the answer and the first one is what's the future it's tough to know tough to actually predict because you can predict the first line of consequence but second order का नहीं पता कि first order is simple that ठीक है creators will keep coming because industry is booming agencies will keep coming creators will keep coming brands will increase but not as fast as the other two तो उसका second order क्या होगा कुछ भी हो सकता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हो गए बहुत सारे क्रिएटर्स आए बट डेड हो गए तो आई कांट प्रेडिक्ट दैट एस्पेक्ट कि क्या होने वाला है बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे डेप्थ एंड नॉलेज वुड डेप्थ नॉलेज एंड पर्सनैलिटी विल टेक ओवर व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ क्रिएटर तो हाँ आई थिंक इफ यू कैन फोकस ऑन दैट एंड बिल्ड समथिंग अराउंड इट यू शुड बी फेयरली सक्सेसफुल आप एक सवाल डॉज कर गए हाँ आप इस स्पेस में रहोगे इन ऑर्डर टू मेक योर फ्यूचर मैं अभी तो रहूँगा यार आई थिंक आई एम राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग वेयर आई एम इट्स अ गुड स्पेस एंड तक के क्रिएटर नहीं बन जाता अच्छे तो कहीं नहीं जा रहा मैं चलो ऑल द वेरी बेस्ट Thanks, फॉर Paul. बिकमिंग अ क्रिएटर फॉर यू नो गोइंग फॉरवर्ड इन दिस जर्नी बहुत मजा आया यार मतलब नहीं मजा आया बहुत कैंडिडली तुमने बात की और मुझे भी काफी अच्छा लगा ये सुन के and I hope that people have understood some bits of what exactly this I think I gave a lot of ज्ञान space is बहुत सारा ज्ञान दे दिया बहुत सारे लोगों से ज्ञान लेके और अभी आप पॉडकास्ट भी शूट करोगे तो वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान बांटना है but if this conversation helped you do check out the alt-uni courses that I've been talking about in this video as well do check out his Instagram check out Restless also there is a Restless podcast that he has made and this is a beautiful place that is created by his team there's others who is sitting here he told me that you know he's responsible for this particular space so हम उनके घर का ऑफिस में बैठे हुए हैं और हम पता कर रहे हैं कि आज के ज़माने के बच्चे कैसे बिजनेसेस बना रहे हैं आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हैंडलिंग ब्रांड्स आल्सो दैट ये क्या बच्चा आके मुझे सिखाएगा चलो थैंक यू वेरी मच नाइस मीटिंग अच्छा लगा चलो